Jai Hind दोस्तों, good evening all. Let's begin with today's session. Look at the first question. Which of the following countries has faced near zero real economic growth averaging around 0.4 percentage between 99 2000 and 23-24 along with the persistently low inflation? The correct answer is Japan. See, आज ही बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट को हाई किया है 0.50 बेसिस पॉइंट से अब यह हो गया है 0.75%। अब बेसिकली व्हाट हैपेंस कि बैंक ऑफ जापान में जो लो इंटरेस्ट रेट है, इस लो इंटरेस्ट रेट की वजह से यहां से लोग मनी बोरो करते हैं, येन में मनी बोरो करेंगे और उसके बाद में येन का कन्वर्जन होगा डॉलर में और फिर ये मल्टीपल सेक्टर्स एंड मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्ट होगा। अब जब बैंक ऑफ जापान जैसे रिवर्सल कर रहा है, यहां पे जब वो रेट को हाइक करते जा रहा है और सिग्नल दे रहा है कि वो लगातार इंटरेस्ट रेट को हाइक करेगा, दैट मीन्स कि मनी विल कम बैक टू जापान। इसका सीधा इंपैक्ट हमें वर्ल्ड मार्केट पे देखने मिल सकता है, राइट, एंड पर्टिकुलरली ऑन दी वोलेटाइल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज। सो करेक्ट आंसर इज जापान हेयर। और ये जो मेन रीजन है इसकी नियर जीरो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ का, दैट इज दी लोअर ह्यूमन कैपिटल। अब जापान की जो पॉपुलेशन है दैट इज द एजिंग पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे लो ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है और इसी की वजह से जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो काफी कम है यहाँ पे, राइट। सो करेक्ट आंसर इज जापान। चलिए, now let's move on to the explanation part. For over 2 decades, Japan has faced near zero economic growth, averaging around 0.4 percentage between 99 2000 and 23-24, along with persistently low inflation. One of the major challenges for the economy has been an unfavorable demographic shift. तो जैसे इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है जापान के पास में। उसकी पॉपुलेशन कैसी है? एजिंग पॉपुलेशन है, राइट। सो स्टैग्नेंट टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, लेबर इनपुट, ये सब काफी कम है जापान में। ये इसके पीछे रीजंस है। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले कि हम आगे चलें, लुक एट द मैप ऑफ जापान। सी, जापान इज एन आर्किपेलागो which can be divided into 4 important segments. The first one is Hokkaido, then Honshu, then Shikoku, and finally Kyushu. अब यहां आप देख सकते हैं 4 मेन इंपॉर्टेंट इसके सेगमेंट्स हैं और जो कैपिटल है that is Tokyo, and capital is situated where it is on the Honshu Island. Plus, look at the coastal area which is formed by Japan. तो यहां आप देख सकते हैं वेस्टर्न साइड में है सी ऑफ जापान, ईस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन है, सदर्न एंड में आपके पास में फिलिपिन सी है और ईस्ट चाइना सी एज वेल, राइट। एंड नॉर्दर्न एंड में आपके पास में सी ऑफ ओकोस्टक है, राइट। सो डू रिमेंबर दीज थिंग। जैसे ये एक आइलैंड है दैट इज रियोक्यू आइलैंड, एंड रियोक्यू आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान, चाइना एंड ताइवान। डू रिमेंबर, इट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान, ताइवान एंड चाइना। तो तीनों ही कंट्रीज अपना क्लेम करती हैं। प्रेजेंट में इसका जो ऑक्यूपेशन है वो जापान के पास में है, राइट। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, द रिलॉस एग्रीमेंट, it has been signed between India and which country? So C for Calcutta, that would be the correct answer. And let me tell you that it is quite similar to the Limoa Agreement of America, right? We signed a Limoa Agreement with America, like America signs 4 fundamental defense agreements with its ally. So India is a close ally of America, and being a close ally, we have signed 4 defense agreements with America, right? So it is the counterpart of Limoa, right? So now let's move on to the explanation part. So it is a bilateral military logistic agreement between India and Russia, approved by the Russian parliament and signed into law ahead of the President Vladimir Putin's India visit in 2025. राइट, ये 4 एग्रीमेंट्स हैं जो अमेरिका के साथ इंडिया ने साइन किए हैं, जिसके बारे में अभी जस्ट मैं बात कर रहा था। तो ये बेसिकली 4 फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कॉमकासा है, देन लिमोआ, BCA एंड GSOMIA, जिसमें से GSOMIA साइन हुआ था 2002 में, एंड लिमोआ साइन हुआ था 2016 में, BECA जो है वो साइन हुआ 2020 में, और कॉमकासा साइन हुआ था 2018 में। डू रिमेंबर दीज एग्रीमेंट्स। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी next question. So next question is, with reference to the recent Supreme Court judgment on Aravalli's mountain range, consider the following statements. The first statement says, Aravalli range is one of the oldest mountain systems in the world. Absolutely correct. It is the example of the fold mountain range, right? Look at the next statement. It acts as a natural barrier against
eastward expansion of the Thar Desert. Again correct. So basically जो थार डेजर्ट का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम करती है अरावली रेंज. द थर्ड स्टेटमेंट इज द सुप्रीम कोर्ट हैज इम्पोज्ड अ कंप्लीट एंड परमानेंट बैन on all the mining activities in the Aravali region. See, it is absolute statement and I have always told you कि जब भी कोई absolute कोई extremist statement आता है please be attentive. यहाँ कोई blanket ban नहीं है. जो भी अपकमिंग लाइक माइनिंग एक्टिविटीज होंगी उन पे बैन लगा दिया गया है, लेकिन जो रनिंग एक्टिविटीज हैं जहां पहले से लाइसेंस मिल चुका है और माइनिंग चल रही है उस पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा इस रूलिंग का. और सुप्रीम कोर्ट की प्रेजेंट रूलिंग के अकॉर्डिंगली व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है अरावली माउंटेन रेंज की उसको एक्सेप्ट कर लिया है और सिर्फ वही एलिवेशंस अरावली रेंज के अंदर माने जाएंगे जिनकी हाइट कम से कम 100 मीटर्स एंड अबव है. तो 100 मीटर्स एंड बिलो अगर है तो वो माउंटेन रेंज की डेफिनेशन में नहीं आएंगे अरावली रेंज में. राइट. सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन पार्ट. द अरावली इज नियरली 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड and prevent desertification by acting as a barrier to the Thar Desert. Absolutely correct. The court pushed fresh mining leased but allowed the existing legal mining under the strict regulation, adopting a calibrated approach. अब यहां देख सकते हैं आप अरावली रेंज बेसिकली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली में है. दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है जहां पे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हाउस और सेक्रेटेरिएट आप देखते हैं ये बेसिकली रायसीना हिल्स हैं और रायसीना हिल्स किसका एक्सटेंशन है? अरावली रेंज का एक्सटेंशन है. एंड लुक एट दिस वन. In May 2024, Supreme Court asked for a uniform definition to protect the hills. The Environment Ministry has proposed a new 100-meter elevation criteria for defining the Aravalis, an unsigned report to the Supreme Court. And recently, Supreme Court accepted this, that okay, जो एलिवेशंस है 100 मीटर्स एंड अबव के उन्हीं को माना जाएगा यहाँ पे अरावली रेंज का हिस्सा. इसकी वजह से अरावली रेंज के अंदर माइनिंग एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं उन एरियाज में जिनका एलिवेशन 100 मीटर्स एंड बिलो है. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सप्लिसिटली enumerate the right to food as a fundamental right. Absolutely correct. Why? See, right to food is not explicitly available under the fundamental right section. Clear? Supreme Court in PUCL case clearly stated that right to food is the part and parcel of Article 21, which is right to life and personal liberty. So there is no doubt that right to food is an integral component of right to life and personal liberty. But is it clearly or explicitly mentioned in the Constitution of India? The answer is no. Right? So Constitution of India में right to food जो है वो explicitly mentioned नहीं है. So this statement is absolutely correct. Look at the second statement. Article 47. अब Article 47 की बात हो रही है means it is talking about the DPSP. So the second statement says Article 47 of the Constitution places a duty on the state to raise the level of nutrition and public health. Absolutely correct. So which of these statements given above is oblique are correct? Correct answer would be C for Calcutta. Both these statements are correct here. Now let's move on to the explanation part. Supreme Court has declared the right to food as a fundamental part of the right to life and personal liberty under Article 21 in case of PUCL versus Union of India 2001. Clear? And इसी के बाद में फिर the Parliament of India came up with the National Food Security Act 2013, which ensured the subsidized food to 2/3 of the population, making food a core aspect of dignity and survival. प्लस आर्टिकल 47 के बारे में हमने बात की, विच इज द पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, लेकिन ये कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है. एंड जो मल्टीपल स्कीम्स हैं, जैसे चाहे वो लाइक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो या फिर वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स हो, तो ये सभी स्कीम्स अल्टीमेटली कहां से निकल रही हैं? ये बेसिकली आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन मतलब राइट टू फूड से ही ओरिजिनेट हो रही है, विच वॉज लॉन्च्ड इन 1975. राइट. चलिए आगे मूव करेंगे. ये स्कीम्स भी ध्यान रखिएगा. नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 93 एंड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इन 2018. ये सब कहां से स्टेम आउट हो रहे हैं? आर्टिकल 21 मींस राइट टू फूड से और सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चाइना सो कॉल्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स primarily aims to achieve which of the following? The correct answer is B for Bombay. Indigenous capability
in extreme ultraviolet lithography and advanced semiconductors, right? So that's the correct answer. Look at the explanation part. So China's so-called Manhattan Project is high security government-led initiative aimed at achieving complete self-sufficiency in semiconductor industry. The primary goal is to master the core technology required for producing advanced chips, specifically the EUV lithography technology, which is currently a Western monopoly, right? So do remember. So question number 6, regional rural banks in India were established on the recommendations of. The correct answer is Narsimhan Committee on the Rural Credit 1975. That's the correct answer. Now look at the explanation part. RRBs were established under the Regional Rural Bank of Act of 1976. So basically statutory bodies based on the recommendations of the Narsimhan Committee on the Rural Credit 1975. अब यहाँ अगर हम बात करें आरआरबी के कंट्रोल की, सो आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई बट सुपरवाइज्ड बाय NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. RBI mandates a higher PSL target for the RRBs. PSL मतलब प्राइम सेक्टर लेंडिंग. तो जो प्राइम सेक्टर लेंडिंग होती है वो आरआरबीज के लिए उसके टारगेट ज्यादा होते हैं, दैट इज 75%, जबकि बाकी बैंक्स के लिए होते हैं 40%. सो 40% फॉर दी scheduled commercial banks but 75% for the RRBs, right? And अगर हम ओनरशिप की बात करें, so equity of the RRBs is held by center, state and the sponsored bank in the ratio of 50, 15 and 35 respectively. Right? Now let's move on to the next question. Question number 7. With reference to the Strait of Malacca, consider the following statements. The first statement says it flows between Indonesia and Philippines. No, that's not the case. It flows between Indonesia and Malaysia and not between Indonesia and Philippines. So statement number 1 is ruled out. So question क्या है? How many of these statements given above is oblique are correct? अब यहाँ देखिए all 4 is ruled out. Why? Because the statement number 1 is incorrect. Look at the second statement. It connects the Indian Ocean and the Pacific Ocean through the South China Sea. Absolutely correct. It is situated between, it connects the Andaman Sea of the Indian Ocean and South China Sea of the Pacific Ocean, right? So the second statement is absolutely correct. Third statement says it is the shortest sea route between the Persian Gulf, supplies and the key Asian markets. Again, correct. So both these statements are correct here, second and third one. Look at the fourth statement. The Phillips Channel of the Singapore Strait is the widest point in the Strait of Malacca. No, it is just opposite. It is the narrowest point, not the widest point. So statement number 4 is incorrect here. Question is how many statements are correct? तो quantum पूछा हुआ है. Correct answer would be V for Bombay. Explanation एक बार यहाँ पे देख लीजिए. Indonesia is nothing but an archipelago. तो यहाँ देख सकते हैं हम, this is Sumatra, this is Kalimantan, right? And यहाँ देख रहे हैं, this is Java, this is Bali, right? So you can see here. एंड हम चलते हैं एक बार मैप देखते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का का. सो दिस द स्ट्रेट ऑफ मलक्का. सो स्ट्रेट ऑफ मलक्का सिचुएटेड बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया. इट कनेक्ट्स द अंडमान सी इन इंडियन ओशन विद द साउथ चाइना सी ऑफ द पैसिफिक ओशन, राइट? अब इसका एक ऑल्टरनेटिव प्लान कर रहा है चाइना थ्रू थाईलैंड. सो बेसिकली चाइना इज प्लानिंग एन ऑल्टरनेटिव ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का. सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? ऑल्टरनेटिव इज KRA कैनाल. और KRA कैनाल जो है बेसिकली आप देख रहे हैं ये रूट जो है इस तरह से कनेक्ट करेगा इंडियन ओशन को विद द पैसिफिक ओशन विद द साउथ चाइना सी, राइट? सो दैट वुड बी द ऑल्टरनेटिव. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following Indian states border Bangladesh? Bangladesh is on the verge of crisis, right? Bangladesh is facing severe protest और ये इंडिया के लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है बिकॉज इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश. इनफैक्ट इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है दैट इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर्स विद एनी कंट्री, दैट इज अराउंड 4096 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 5 इंडियन स्टेट्स फॉर्म्स बॉर्डर विद बांग्लादेश. क्वेश्चन इज which of the following Indian states forms border with Bangladesh? Select the correct answer using the codes given below. So look at the first statement. Assam, absolutely correct. काफी sensitive border है असम के साथ में. अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर नहीं है, मिजोरम के साथ बॉर्डर है, मणिपुर के साथ नहीं है, त्रिपुरा के साथ में है, राइट? सो 1, 3 and 5 that would be the correct answer. So C for Calcutta would be the correct answer, right? So 5 टोटल इंडियन स्टेट्स हैं जिसके साथ में बॉर्डर फॉर्म कर रहा है बांग्लादेश. सो वेस्ट बंगाल इज देयर, असम इज देयर, मेघालय इज देयर, मिजोरम इज देयर एंड त्रिपुरा इज ऑल्सो देयर, राइट?
ये 5 स्टेट्स हैं जिसके साथ बॉर्डर फॉर्म कर रहा है। लुक एट द एक्सप्लेनेशन। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैप में, दिस इज बांग्लादेश, दिस इज मेघालय, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड दिस इज मिजोरम। ये रहा असम, राइट? सो बांग्लादेश फॉर्म्स इट्स बॉर्डर विथ द स्टेट ऑफ असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, राइट, एंड वेस्ट बंगाल। सो डू रिमेंबर, तो मणिपुर के साथ बॉर्डर नहीं है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9, with reference to the extradition treaty between India and Bangladesh, consider the following statements. See why we have framed this question, because recently Bangladesh requested India to extradite the former Prime Minister Sheikh Hasina. So look at the first statement. The treaty was signed in 2013, absolutely correct, to address the cross-border movement of the fugitive between two countries, absolutely correct. अब बेसिकली हमारा जो एक्सट्रेडिशन लॉ है, जो फाउंडेशन एग्रीमेंट, जो हमारा फाउंडेशनल लॉ है जिसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, दैट इज एक्सट्रेडिशन एक्ट ऑफ 1962 व्हिच केम इनटू फैक्ट इन 1963। अब प्रेजेंट में इंडिया के 48 जुरिसडिक्शंस, 48 स्टेट्स के साथ में हमारे एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज हैं, अंडरस्टैंडिंग हमारी। बांग्लादेश के साथ साइन हुआ था 2013 में, एब्सोल्युटली करेक्ट। द ट्रीटी मेक्स एक्सट्रेडिशन मैंडेटरी इन ऑल द केसेस। कैसा स्टेटमेंट है? एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, बी अटेंटिव। Second statement is absolutely incorrect. Question है, which of these statements given above is oblique are correct? Correct answer would be only one. So A for Ahmedabad would be the correct answer. See, the agreement was signed in 2013 and it was modified in 2016. It was amended in 2016. And extradition can be denied on certain grounds. Specifically तब जब ये good faith में ना किया गया हो, right? So look at this one. Article 8 of the treaty, it allows the refusal if the accusations are not made in good faith or in the interest of justice, giving the executive significant diplomatic discretion. तो यहाँ पे आपके पास में diplomatic discretion है, तो अगर इंडिया चाहे तो इसको रिफ्यूज कर सकता है by invoking Article 8 of the extradition treaty between India and Bangladesh, right? Now let's move on to the next question. Consider the following countries. अब ये UPSC Prelims 2024 का क्वेश्चन है. So look at this one. Finland, Germany, Norway, and Russia. How many of the above countries have a border with Northern Sea? See, North Sea is quite famous for the sweet crude oil. Which one? For the sweet crude oil. Sweet crude means a crude oil having lesser sulfur content. So, Russia के साथ इसका कोई coastal area नहीं. In fact, Finland के साथ में भी नहीं है. Right? Correct answer would be Germany and Norway, means 2. B for Bombay would be the correct answer. So look at the explanation part. This is the map of North Sea. So North Sea forms like coastal area with the Scotland, UK, France is there, Belgium is there, Netherlands is there, Denmark is there, right? Norway is there. अब यहाँ Russia और Finland नहीं है. Clear? So North Sea जो है, that is quite famous for the sweet crude oil and it is also favorable for the fisheries and it is quite famous for the like hydrocarbon reserves. चलिए, now let's move on to the next question. Again prelims का question है last year का. Which one of the following launched Nature Solutions Finance Hub for Asia and the Pacific? The correct answer is Asian Development Bank. So ADB, it was set up in 1967 and its headquarters is based in Philippines, Manila, right? So it is based in Philippines and it was set up in 1967. Look at the explanation part. The Asian Development Bank launched Nature Solution Finance Hub for Asia and the Pacific to scale up investments in nature-based solutions such as the ecosystem restoration, climate resilience, biodiversity conservation, and sustainable land and water management across the Asia-Pacific region, right? And the initiative aligns with Asian Development Bank's broader focus on climate finance, sustainability, and nature-positive development. So this was the last question of today's session. Please join our Telegram channel and be the part of this initiative. It is going to be very crucial for all the civil services aspirants. मिलेंगे दोस्तों next session में हम. Bye bye, take care, जय हिंद.